Welcome to the Nehru Center India. Today we have with us Professor S. Irfan Habib and he'll be speaking to us about Bhagat Singh and his life. Welcome, sir. Thank you very much for giving me this opportunity to come and be with you. We are talking of somebody who has been an inspiration for a large number of Indians, and a man who lived a very short life. And it's a coincidence that many great people led a very short life, but they did great things, and Bhagat Singh is one of them. And but this short life doesn't mean that he didn't leave behind a very serious sort of legacy, and legacy not just of martyrdom, which is important, which we respect, and we should respect, and we do. Unfortunately, we only end up with his martyrdom most of the time, because we find that it's a very convenient way to remember him, and we do this on 28th September, on his birthday, and we do it on 23rd March, on his martyrdom day, and rest of the year we just don't remember him. But my emphasis always has been, because my association with Bhagat Singh is almost 45-year-old now, because it began in late 70s when I did my work. Then I later on shifted to history of science and forgot about Bhagat Singh. I came back to Bhagat Singh when 100 years of his birth centenary was happening in the country, and then I published my book, To Make the Deaf Hear, which was my thesis, which I never cared to bring into public domain. It remained a little text which nobody knew about. But anyway, I thought it's an important thing to bring it out, and I did. Now, when I decided to work on him, I thought one should really look for something beyond common belief, as I said before, that Bhagat Singh was a great Shaheed, and that's the end of it. But when I try to delve into the literature in the National Archives, in the libraries all around, like his life was very short, 7-8 years of active life. But in that active life, he wrote extensively on different issues. And I say this very often whenever I speak, that when we talk of Bhagat Singh and when we remember him, we should always remember that we are talking of someone who left us at the age of 23. He wrote his first article, journalistic piece, at the age of 17. In 1924, and so that's from 1924 to 1931. This is the period, which means 24/6 plus 3, almost 8 or 9 years. So one need to keep in mind that this short period, out of which large chunk was spent underground, escaping from the British, and 2 years were spent in jail, waiting for his martyrdom. But despite that, he was so prolific, and this is something which should be an inspiration for the youth of the country, that he touched upon almost everything which he saw happening around him, which means anything related to religion, anything related to communalism, fanaticism, student and politics. I am raising these issues because they are all relevant even now. Untouchability, and scientific temper, justice for women, gender parity. These are issues which are significant issues even now, unfortunately. They shouldn't have been, but they are.
and he is writing all this in 1928, 27, 26, mostly in 1928, 29. So he was someone who was a thinking man, and so he left behind a revolutionary legacy, an inheritance which we tend to forget. We find very uncomfortable to follow what he has written, because it's very easy to follow the Shahadat, because you just remember him and venerate him on 23rd March, garland him, and then forget for the rest of the year. We do this with other significant figures as well, but Bhagat Singh is important because we see him as a great hero, which he is, of course. But that hero is remembered in a very incomplete manner. We don't try to see what was the intellectual legacy he has left behind. विचारों की विरासत जो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उनकी शहादत है, और मैं समझता हूँ शहादत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शहादत तो और बहुत लोग हैं, भगत सिंह के साथ भी 2 लोग शहीद हुए, तो शहादत का महत्व है, उसका सम्मान है, लेकिन उससे ज़्यादा उन विचारों का सम्मान है जो भगत सिंह ने हमारे लिए छोड़े। दुख की बात यह है कि हम उन विचारों के बारे में नहीं सोचते। मैं उन विचारों पर आने से पहले कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहूँगा जो आमतौर से लोग नहीं जानते। जैसे भगत सिंह का परिवार, भगत सिंह क्यों बने, किस माहौल में बने, कहाँ कैसे परिवार में वो जन्मे, और अपने परिवार से उन्होंने क्या पाया और उसको कैसे वो आगे ले गए। भगत सिंह का जन्म हुआ एक ऐसे परिवार में जो बहुत ही राष्ट्रवादी परिवार था, बड़ा एक्टिव था। सरदार किशन सिंह उनके पिता कांग्रेस के मेंबर थे, गांधी से अफेक्टेड थे, भागीदारी भी रहती थी, आंदोलन में हिस्सा लेते थे। उनके चाचा अजीत सिंह वो एक क्रांतिकारी थे। वो पहला आदमी है जिसने देश में किसान आंदोलन शुरू किया, पंजाब में, पूरे देश में ही कहना चाहिए, क्योंकि उस समय 1906, 7, 8 में तो आंदोलन का कोई कहीं जिक्र भी नहीं होता था। भारत माता सोसाइटी बनाई लाला लाजपत राय के साथ मिलकर अजीत सिंह ने, और ये किसानों का आंदोलन, किसानों के अधिकारों की रक्षा की बात की, अंग्रेज़ कैसे ज़मीन हड़प रहे थे किसानों की, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तो ये चीज़ें 1906-7 में भगत सिंह के चचा करते हैं, और भगत सिंह ये सब देखते हैं नौजवान की हैसियत से, तो जाहिर है कि उसका एक असर उनके सोच पर भी पड़ा, और उनकी जो वैचारिक इवोल्यूशन है उस पर भी हमें देखने को मिलता है। उनके दूसरे चचा स्वर्ण सिंह, वो भी जेल में रहे, और जेल में ही उनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ, उनका देहांत भी हो गया कम उम्र में। अजीत सिंह सेल्फ एग्जाइल्ड, उनको एक्चुअली देश निकाला, अंग्रेज़ों ने दिया, वो यहाँ से चले गए ईरान, और ईरान से फिर यूरोप, और वो हिंदुस्तान वापस ही नहीं आए। वहीं से बर्लिन में और जर्मनी में घूमते घूमते देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। तो भगत सिंह के पास ये विरासत थी अपने परिवार से कि कैसे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है, और किसान, मज़दूर, गरीब, उसके अधिकारों की लड़ाई को कैसे लड़ा जाना चाहिए, और वो क्यों ज़रूरी है। तो भगत सिंह के जीवन में जब हम उनके लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हमें ये ख्याल होना चाहिए कि ये उन्होंने अपने परिवार से ही सीखा, उसको आगे बढ़ाया, परिवार ने एक हद तक उनको दिया, उसके बाद उसको इवॉल्व कैसे किया वो भगत सिंह ने पढ़ा, और उसके बारे में आगे बात करूँगा कैसे वो पढ़ते थे। तो ये एक परिवार है जिसने भगत सिंह जैसे इंसान को जन्म दिया, और ये सब चीज़ें विरासत में उनको मिली, और वहीं से उन्होंने सब कुछ हासिल भी किया। अपनी जो जीवन है नौजवानी भगत सिंह की, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह थे शुरू में, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। उनके जो बहुत सारे दोस्त हैं, उनकी जो आप उससे कहानी आप सुने, यशपाल ने, क्योंकि यशपाल एक बहुत अच्छे लेखक भी रहे आगे चल के, और यशपाल ने बहुत कुछ लिखा। सिंहावलोकन
करके 3 वॉल्यूम में किताब है, जिसमें वो सारे अपने क्रांतिकारी साथियों के जीवन के बारे में, उनकी युवावस्था के बारे में, एजुकेशन के बारे में लिखते हैं, और वो भगत सिंह के बारे में भी लिखते हैं। कैसे भगत सिंह फिल्मों को देखने का शौक़ था, उसका पूरा जिक्र है कि वो अंकल टॉम्स कैबिन उनकी बड़ी फेवरेट फिल्म थी, और बहुत सारे लिटरेरी फिगर्स हैं जिनका शौक़ था पढ़ने का भगत सिंह को। तो ये एक ऐसा सोच भगत सिंह के बारे में हमें बनानी चाहिए कि वो आदमी कोई स्पेशल आदमी नहीं है, वो आदमी एक नॉर्मल इंसान है, और एक नॉर्मल इंसान होते हुए भी और नॉर्मल वीकनेसेस भी हैं उसकी। वो खुद लिखते भी हैं कि मैं प्रॉफिट थोड़ी हूँ, मेरी कमियाँ भी हैं और मेरी अच्छाइयाँ भी हैं, जैसे सब में होती हैं, लेकिन ही बिल्ट on those weaknesses and strengths and reached where he reached. So this is something which any youth today can do. The only thing is that you need to inspire yourself with certain ideas, you need to commit yourself to certain ideas, and that commitment is important. That's what we find in Bhagat Singh, which was absolutely uncompromising on certain issues, and he remained uncompromising till the end of his life on 20th March 1931. So this is in brief, one can see the evolution of a young man. There are lots of things one can say, but I am not going into that more, because we will talk about other things. भगत सिंह का जो जीवन है वो शुरू के ज़िंदगी, परिवार तो उनका, वो भी ज़रूरी है बताना, वो परिवार तो उनका हिंदुस्तान का था, इंडियन पार्ट ऑफ पंजाब, लेकिन उनको ब्रिटिश सरकार ने उनके परिवार को कुछ ज़मीन अलॉट किया लायलपुर में, जो अब फैसलाबाद जिसका नाम हो गया, और वहाँ पर एक गांव था जहाँ वो पैदा हुए, और उसी गांव में अभी भी उनका एक घर है, जिस घर को पाकिस्तान की सरकार ने म्यूज़ियम, सरकार ने तो नहीं, वहाँ के कुछ जो लोग हैं रहने वाले जिनके पास वो मकान है, वो भगत सिंह के सम्मान में उस कमरे को जिसमें भगत सिंह पैदा हुए उसको उन्होंने म्यूज़ियम बना रखा है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इकट्ठी की हैं, पूरी वो डिस्प्ले पर भी हैं, लोग वहाँ जाते भी हैं। भगत सिंह की माँ की चक्की भी है, वो भी वहाँ रखी है, तो ये सब वहाँ पे मौजूद है। तो भगत सिंह का जो जीवन है वो परिवार का उस पार्ट में गुजरा जो आज पाकिस्तान है, और भगत सिंह की जो कर्म भूमि है वो भी लाहौर ही रही, क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी भगत सिंह की सब लाहौर में थी। वहीं पढ़े, वहीं सारी गतिविधियाँ भी उनकी रहीं, सीमित कुछ समय बाहर गुजरा, लेकिन ज़्यादा एक्टिविटीज़ लाहौर में रही। उन एक्टिविटीज़ में अगर आप शुरू करें तो सबसे पहले तो भगत सिंह का जीवन, उन्होंने नेशनल कॉलेज DAV स्कूल से पढ़ाई शुरू की, उसके बाद लाजपत राय ने एक नेशनल कॉलेज खोला, नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ जब गांधी जी का 1921-22 में, और सरकारी संस्थानों का बहिष्कार किया, तो उसमें एक कॉलेज खोला गया था, तो भगत सिंह ने भी ज्वाइन किया उस कॉलेज को। वो लाहौर में एक ब्रैड लॉ हॉल है, जब मैं लाहौर गया तो मैंने भी वो देखा, वो बड़ा स्पेशल जगह है। उस ब्रैड लॉ हॉल में वो कॉलेज चला करता था, तो भगत सिंह भी उसमें कुछ साल पढ़े, लेकिन समय क्योंकि पढ़ाई का बहुत कम था, बाद में फिर क्रांतिकारी जीवन शुरू हुआ। पिता से संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि दोनों चीज़ें वो करें, परिवार भी की भी देखें और राजनीति भी करें, और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई भी रहे। भगत सिंह का मानना ये था कि वो दो काम एक साथ नहीं करेंगे, उनको अपने जीवन ही समर्पित करना है देश की आज़ादी के लिए। तो ये एक कहानी है, वो बीच में बहुत सारे झगड़े हैं जिसके बारे में आप कहीं पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, जो आपस में वो चलता रहता था। लेकिन ये कि एक शुरुआत है भगत सिंह की, एक नौजवान, एक नॉर्मल नौजवान की तरह से, कि परिवार का प्रेशर कि वो दोनों काम करें। वो ये नहीं चाहते थे कि आज़ादी की लड़ाई को छोड़े, भगत सिंह के पिता खुद आज़ादी की लड़ाई में थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि वो दोनों काम से जुड़ा रहे।
So Bhagat Singh was like in the beginning as a young man, he believed that we need the youth of those days needed a public platform, and that need took him to establish this Naujawan Bharat Sabha, in which not only Bhagat Singh and his friends like Sukhdev and Bhagwati Charan Vora and others, there were some left-wing congressmen like Dr. Satyapal and Saifuddin Kichlu, who collaborated with them, who participated in the activities of the Sabha and helped them to actually organize programs, and the platform of Naujawan Bharat Sabha was used by the left-wing congressmen as well in Punjab. So it was a platform which was used by people who believed in secularism, who believed in the rights of the peasants, who believed in the rights of the workers, who believed in the rights of the students in politics. Now, things which are said today that students are meant to go and study in the university. This was not the idea of Bhagat Singh. He knew that university, what is the definition of a university? One can go into the details of that, but that's not the time for us to do. But Bhagat Singh knew that the youth who come to the university don't come just to open their textbooks and forget about the world around. They come here to learn, spread the word around about what is happening in the country, what is needed to be done, what is their responsibility. If they need to protest, they will protest, but they will not protest at the cost of their education, but it has to go on simultaneously. So when students do protest today, one should always go back to Bhagat Singh and his ideas and what he has written. He has written a full article, 4-page article on students and politics, and he talks about the role of students in the university, in the campus, in the college. So these are things which were so important for him, and they were all Naujawan Bharat Sabha. When it became active, the British government actually became very nervous, and they sent complaints to the parents that your wards, in the college, they are getting into politics, and if any student is caught indulging in politics, he will be expelled. So these were the sort of action which the British government had to take because of the activities of the student unions. Student unions were actually almost made redundant by this order, and that's why Naujawan Bharat Sabha, a separate platform outside the college, was founded by Bhagat Singh. That was the idea. So the activities of Naujawan Bharat Sabha involved lots of things, organizing programs, etc. They used to do interesting things, and some very enthusiastic members of the Sabha used to organize social dinners, where the food was cooked for everybody and eaten together without discrimination of caste, gender, religion, etc. They used to sit all together on the mat and eat all those foods, all the food. Some over-enthusiastic man, which Yashpal has written in his book, cooked halal and chatka meat together, because there were Sikhs and Muslims who were the members of Naujawan Bharat Sabha, and so they tried to experiment. In one pot, they cooked the meat and they all ate together. So these were the things which they tried to bring people together, forget about discrimination on caste, religion, culture, language, etc. Bring them all together. Slogans were chosen, like the Congress party of those times, in its very in its own commitment to bring in all communities together. There was, I'm not being critical of what Congress was doing at that time, but it was doing for the good, of course. But Bhagat Singh found that the slogans which remind people of their religion, like Sat Sri Akal for Sikhs, Allahu Akbar, Nara Takbir for Muslims, and Bande Mataram for Hindus, it reminds people of their respective religions. So, and we are not seeing them as Indians. So we should use only Inqilab Zindabad
एंड वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दुनिया के मजदूरों एक हो। तो इस तरह के स्लोगन से इस्तेमाल किए, कोशिश ये किया है सब लोगों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब धर्म को छोड़कर सब लोग एक हिंदुस्तानी की तरह बिहेव करें और हिंदुस्तानी की तरह संघर्ष करें। अब ये एक्टिविटीज़ नौजवान भारत सभा की तो थी ही, उसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है जो जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि नौजवान भारत सभा ने एक ट्रैक्ट सोसाइटी भी बनाई। ट्रैक्ट सोसाइटी थी which was inspired by the French Revolution by Voltaire. Voltaire in 18th century 1789, before the revolution, he started a tract society where cheap pamphlets were published, which were accessible for people, and because big books nobody was reading and nobody could buy, and so he tried to do that, and so they copied that model. And Shaheed Das, who was one of their senior teachers, he became in charge of that tract society, and very provocative issues were taken up. British government actually banned quite a few of them, and so they were written by people like other revolutionaries like Hardayal, Shaheed Das himself, and so many others, and lots of topics were chosen, which became almost like wealth of nations, like rights of the workers, the issues related to peasantry, and some of them were very provocative, so the British government banned quite a few of them. But these were the activities of नौजवान भारत सभा। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने जो बहुत पॉपुलर रहा, और अगर आप उस वक्त की जो आर्काइवल फाइल्स हैं और मैंने जो देखी भी हैं, उसमें आपको पता चलता है कि कांग्रेस की मेंबरशिप नौजवानों में काफ़ी हद तक डाउन हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स नौजवान भारत सभा के सदस्य बने। गांधी का जो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31, उसका कैंपेन करने के लिए जो मीटिंग्स होती थी पंजाब में, वो जॉइंट मीटिंग्स होती थी, और इसलिए होती थी क्योंकि सारे नौजवान भारत सभा में थे। तो कांग्रेस को ये महसूस हुआ कि बेहतर ये है कि नौजवान भारत सभा को जोड़ लिया जाए, क्योंकि उद्देश्य तो दोनों के एक ही थे ब्रॉडली। तो वो जॉइंट मीटिंग्स हुआ करती थी। दिस शोज़ कि भगत सिंह का रोल सिर्फ एक हिंसक क्रांति नहीं थी, ये रोल एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल प्रोग्राम है। और इसलिए मैं इसको उठा भी रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जो हिंसा में विश्वास रखते थे, वो तो भगत सिंह ने बाद में आगे लिखा है, वो उसके बारे में बात करूँगा, लेकिन ये तो बात 1926-27 की है, 28-29 की है, जहाँ कांग्रेस और नौजवान भारत सभा मिल के प्रोग्राम्स करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, और ज़ाहिर है कि कॉमन प्रोग्राम्स हैं, एक दूसरे से सहमत हैं बहुत सारे इश्यूज़ पर, इसी को लेकर वो एक साथ प्रोग्राम कर सकते थे। बहुत से सारी मीटिंग्स के आपको आर्काइव्स में मिल जाएगा रिकॉर्ड कि आप जॉइंट प्रोग्राम्स इन लोगों के हुआ करते थे, जो प्रूव करता है कि नौजवान भारत सभा कितनी पॉपुलर थी नौजवानों में उस वक्त, और उसका एक बड़ा महत्व है, एक इम्पोर्टेंस है। तो भगत सिंह की इम्पोर्टेंस सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो असेंबली में बम फेंका और सॉन्डर्स का मर्डर किया। भगत सिंह की और भगत सिंह की संस्थाओं की, उसके साथियों की का महत्व है देश में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मतलब नॉर्थ इंडिया की इस पार्ट में एक जन चेतना पैदा करना, जिसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को भी हुआ, जिसको कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना चाहिए, करती भी है, कुछ लोग करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी में उस समय थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू। गांधी का तो हम जानते हैं, गांधी का अपना एटीट्यूड क्या था, वो हिंसा और अहिंसा के को लेकर वो कम बोलते थे, जब बोलते थे तो क्रिटिकली बोलते थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू उन लोगों में है जिस आदमी ने भगत सिंह से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित थे, उसके विचारों से प्रभावित थे, और जब भगत सिंह जेल में थे तो भगत सिंह से मिलने गए, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार। उन लोगों से जो भूख हड़ताल पर थे, भूख हड़ताल किस चीज़ के लिए थी? भूख हड़ताल इसलिए थी कि उनको लिटरेचर चाहिए पढ़ने के लिए,
अखबार चाहिए, हाँ? और एक जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके जो राइट्स होते हैं वो राइट चाहिए, क्रिमिनल्स वाले की सज़ा उनको नहीं मिलनी है। तो ये अधिकारों की की डिमांड ब्रिटिश सरकार से वो करते थे, और उसी में जतिन दास की बाद में का देहांत भी हुआ। तो नेहरू ये देखकर कि भाई ये लोग ऐसी लड़ाई, महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो बाकायदा लाहौर मिलने गए। कांग्रेस बुलेटिन निकला करता था, उसके नेहरू एडिटर थे, और एक बार 1928-29 में 29-30 में जब जेल में थे भगत सिंह, एक सिंपैथेटिक नोट छाप दिया नेहरू ने, और उसके बाद महात्मा गांधी को थोड़ा बुरा लगा कि भाई कांग्रेस के बुलेटिन में क्रांतिकारियों की सपोर्ट में और हमदर्दी रखते हुए नेहरू ऐसा कुछ लिख दें। तो नेहरू को बुलाया महात्मा गांधी ने, और बाकायदा डांटा मतलब अपनी भाषा में जो हो सकती थी, बच्चे की तरह नहीं डांटा, लेकिन ये कहा कि भाई ये नहीं करना है। नेहरू एज यूजुअल गांधी के सम्मान में जो वो कहा करते थे सुन लेते थे। ये कहा कि हाँ ठीक है, आगे से नहीं होगा, लेकिन किया उन्होंने वही जो वो करते रहे। बाद में भी मिलने गए और उनकी सपोर्ट में स्टेटमेंट्स भी देते रहे। तो ये तो नेहरू की तरफ से है। भगत सिंह ने खुद 1928 में एक वो निकला करता था, अखबार निकला करता था, जिसमें भगत सिंह ने एज एडिटोरियल असिस्टेंट काम भी किया कुछ दिन, और उसी में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। कीर्ति अमृतसर से निकलता था, सोहन सिंह जोश वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी के लीडर थे उस समय के, उनका अखबार था वो। तो उसमें उन्होंने लिखा कांग्रेस के नए नौजवान नवयुवक नेता, एक आर्टिकल था, और उसमें उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दो के बारे में लिखा। और वो लिखते हैं कि हमारे देश में इस समय कांग्रेस के दो ये नवयुवक नेता हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, क्योंकि 1920s में इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी बोस और नेहरू ने मिलकर। पूरे देश में नौजवानों के बीच में उन्होंने ये कैंपेन चलाया। आज जो बोस और नेहरू की दुश्मनी की बात होती है और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, लोगों को ये एहसास ही नहीं है कि वो एक दूसरे के कितना करीब थे और कितना सहमत थे अपने विचारों से। कुछ डिफरेंसेस थे, डिफरेंसेस उन्हीं में होते हैं जो सोचते हैं। जो मंदबुद्धि होता है वो उसमें वो डिफरेंसेस के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसके पास सोच ही नहीं है। जब सोच नहीं है तो वो फिर डिफरेंसेस क्या होंगे? तो डिफरेंसेस उन्हीं में होते हैं जिनके पास विचार होते हैं, क्योंकि विचारों में ही मतभेद होता है। वो कोई व्यक्तिगत मतभेद उनके नहीं थे, किसी भी मुद्दे पर विचारों के मतभेद थे। और विचारों के मतभेद पटेल, नेहरू, गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, ये सब पढ़े लिखे लोग थे जो सोचते थे। आज की जो हमारी लीडरशिप है, उस लीडरशिप से आप कंपेयर करेंगे तो आपको अफसोस होगा। अफसोस इसलिए होगा क्योंकि आप देखेंगे कि ये लोग एक कितना दूर हैं, कितना फासला इनमें, और अक्रॉस पार्टीज़ ना, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी गिने चुने लोग बचे हैं जो सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। उस समय ज़्यादातर लोग वो थे जो बड़ी विरासत छोड़ के गए, जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो वो पढ़ते भी थे और लिखते भी थे। तो जब वो पढ़ते लिखते थे तो फिर वो डिसएग्रीमेंट्स भी होते थे, लेकिन एक दूसरे का सम्मान बाकी रहता था हमेशा। कभी एक दूसरे के बारे में कोई कुछ न कहा न कभी बोला। एनीवे, ये तो एक आज के संदर्भ में आप उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन उस समय भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह ने नेहरू के बारे में क्या लिखा, बोस के बारे में क्या लिखा, वो लिखते हैं कि भाई ये नेताजी हमारे सुभाष चंद्र बोस हमारे बड़े पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन वो एक इमोशनल बंगाली हैं। और वो हमारा जो पुराना संस्कृति है, हमारी जो पूरी कल्चर है, उसके बारे में बात करते हैं, उसमें भी उनका विश्वास है। वो रिफॉर्म में बिलीव करते हैं। तो ठीक है, उनका सम्मान हम करते हैं,
लेकिन आज के नौजवानों के लिए अगर कोई व्यक्ति है जिसका अनुसरण हमारे देश के नौजवानों को करना चाहिए, वो जवाहरलाल नेहरू है। ये भगत सिंह के शब्द हैं 1928 में। और वो इसलिए क्योंकि वो एक क्रांतिकारी विचारों वाला व्यक्ति है, जो एक देश को नए सिरे से बनाना चाहता है। वो रिफॉर्म नहीं चाहता, वो क्रांति चाहता है। इंस्टीट्यूशंस को बदला जाए, नया रूप दिया जाए। तो हमारे देश के नौजवानों को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। तो नेहरू उन लोगों में है भगत सिंह के लिए 1928 में। आगे वो विचार बदलते ना बदलते इसका पता नहीं, लेकिन 1928 तक भगत सिंह के विचार ये थे। और ये सम्मान एक दूसरे के लिए आपको देखने को मिलेगा। भगत सिंह के बारे में जो नेहरू लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, वो भी हमें पढ़ने को मिलता है। वो भी उसी तरह के विचार हैं, तो वही रेस्पेक्ट है भगत सिंह की शहादत की नहीं, भगत सिंह के विचारों की। शहादत की रेस्पेक्ट तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हाउ यू हैव टू वेनरेट हिम एज एन आइडियोलॉग, somebody who had progressive ideas, progressive thoughts, who believed in pluralism, who believed in secularism, who believed in the rights of workers and peasants. So these were issues which was close to Nehru's heart, and they were close to Bhagat Singh's heart. So these were things which brought them together. दूसरी चीज़ दोनों में कॉमन क्या थी, जो भगत सिंह के जो जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि सब लोग, नौजवान लोग उस किताब क्या उस ऐसे को पढ़ें, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई एम एन एथीस्ट। और उस पर आने से पहले ये कहना ज़रूरी है कि भगत सिंह का जो इवोल्यूशन है एज एन इंटेलेक्चुअल, वो उनका जो जेल में 2 साल गुजरे, उसमें एक बहुत मैच्योरिटी आई, बहुत कुछ पढ़ने को मिला, बहुत समय भी था पढ़ने का। और वो व्यक्ति जो सारी जीवन पढ़ता रहा, क्योंकि उनकी माँ विद्यावती, उन्होंने कई बार कमेंट किए, और यशपाल ने और लोगों ने भी लिखा है, जितेंद्र सानियाल जिन्होंने पहली बायोग्राफी भगत सिंह की लिखी आज़ादी से पहले, जो उनके साथी भी थे, तो वो एक्चुअली पहली बायोग्राफी मानी जाती है भगत सिंह की। उसमें भी उन्होंने भी ये लिखा कि भगत सिंह को कभी किसी ने दोनों जेबों में बिना किताबों के देखा ही नहीं। जैकेट की दोनों जेबों में किताबें रहती थी, और माँ डांटती थी कि तुम अपने कपड़ों को फाड़ देते हो, जैकेट की जेब फट जाती है किताबों से। तो ये लोगों ने जिक्र किया है कि कितना कमिटमेंट उस आदमी का था, कि वो, जैसे यशपाल लिखते हैं अपने उसमें, कि वो भगत सिंह एक लाहौर के पास उनका गांव था, जहाँ से भगत सिंह के पिता बहुत से काम करते थे। इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट भी हो गए थे वो कुछ दिन के लिए, एक दफ्तर भी खोल लिया था लाहौर में, जो इन क्रांतिकारियों का, भगत सिंह वगैरह का अड्डा भी था। वहीं सोते थे, वहीं रहते थे, और एक डेयरी का काम भी करते थे। तो गांव से दूध लाते थे, लाहौर में आके हलवाई और उनको बेचते थे। तो भगत सिंह कभी कभी होता था कि दूध लेके आते थे, तो एक किताब हाथ में होती थी, और वो जो गाड़ी में बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी जो भी होती थी, वो चलती रहती थी, वो किताब पढ़ते रहते थे। तो ये किस्से उनके साथियों ने लिखे हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कितना कमिटमेंट। और उसने भगत सिंह से एक बार पूछा लोगों ने कि भाई तुमसे जब कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी तो तुम कुछ अलग थे, अब काफ़ी कुछ बदल गए, तुम्हारे विचार बदल गए, तुम्हारे सोच बदल गई। लेकिन कुछ नहीं, सब इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ स्टडी। इट्स ओनली द बुक्स विच हैव चेंज मी। आई हैव स्पेंट majority of my time in reading about the world, in reading about poetry, reading about economics, reading about history, reading about anything which was available to him, reading about the workers' movements all over the world. And तो भगत सिंह तो was actually internationalist in his perspective. वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन से भी अफेक्टेड थे, वो आयरलैंड की जो क्रांति और संघर्ष चल रहा था उससे भी अफेक्टेड थे, अफ्रीका में जो लड़ाइयाँ थी उसके बारे में बात करते थे।
तो ये वो व्यक्ति है जिसने कांग्रेस के इंटरनेशनलिज्म से पहले इंटरनेशनलिज्म की बात की, है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बहुत छोटा सा आदमी है, कांग्रेस से बड़ी संस्था है, एक छोटा सा आदमी है जो एक छोटी सी संस्था चलाता है, छोटा सा ग्रुप है, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी है, जिसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। आज के नौजवानों को ख़ास तौर से जानने की ज़रूरत है। भगत सिंह को याद करना सिर्फ शहादत को याद करना नहीं है, भगत सिंह को याद करना है तो भगत सिंह के विचारों को याद करना है, और वो आज के हिंदुस्तान में ज़्यादा ज़रूरी है। अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी प्रॉब्लम जो भगत सिंह ने उठाई, चाहे वो सांप्रदायिकता से जुड़ी हों, चाहे जातिवाद से जुड़ी हों, वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जानी चाहिए थी, हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक उतनी ही ज्वलंत हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, अनफॉर्चुनेटली, जितनी उस समय थी। और यही एक हमारे आज के जो हिंदुस्तान है उसको भगत सिंह के विचारों की ज़रूरत है, भगत सिंह के राष्ट्रवाद की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रवाद की भी परिभाषा भगत सिंह की कुछ और है। भगत सिंह ने, और मैंने इस पर लिखा भी है, अलग से भी लिखा है, इस किताब में तो उतना नहीं है, अलग से और जो बात सी मैं लिखता रहा उसके बाद, कि भगत सिंह ने राष्ट्रवाद को परिभाषित किया कि भाई राष्ट्रवाद उस गरीब किसान मजदूर के लिए राष्ट्रवाद का क्या महत्व है जिसको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, जिसके खाने के लिए पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, उसके लिए राष्ट्रवाद का क्या महत्व है। तो राष्ट्रवाद वो राष्ट्रवाद है, या वो राष्ट्रवाद या वो राष्ट्र की परिकल्पना हमें करनी चाहिए जिसमें 98% लोगों की भागीदारी हो गवर्नेंस में, 2% लोगों की नहीं, 2% अमीरों की नहीं। हमारा देश तो 2% अमीर चला रहे हैं, उस वक्त भगत सिंह कहते हैं 1928, 26, 27 में। मुझे वो देश चाहिए जिसमें 98% लोगों की भागीदारी हो। तो राष्ट्रवाद की भी परिभाषा तभी हो सकती है जब राष्ट्रवाद में या राष्ट्र में भागीदारी लोगों की हो। ऐसे राष्ट्रवाद का क्या मतलब जो इसमें लोग भूखे हों, उस राष्ट्रवाद का क्या इस्तेमाल है, क्या मतलब है। या जिसमें लोग धर्म के नाम पर लड़ते हों, या जिसमें लोग जाति के नाम पर लड़ते हों। और यही नहीं, एक उन्होंने लेख लिखा जातिवाद पर, अस्पृश्यता पर, अनटचेबिलिटी पर, और उस पर वो कहते हैं कि भाई आप बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिमांड करते हैं अंग्रेज़ों से, करनी भी चाहिए, आज़ादी भी चाहिए, और आज़ादी के साथ बहुत सारी और डिमांड्स हमारी हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने अपने सिटीजन्स के साथ, अपने देशवासियों के साथ क्या बर्ताव किया है सदियों से। हम अपने देश में एक बड़ा सेक्शन है, 80% लोग जिनको इंसान नहीं मानते, जिनके छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, जिनके साथ हम खाना नहीं खा सकते। तो अगर हम अपने देश में देशवासियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमें क्या अधिकार है अंग्रेज़ों से बराबरी का या अंग्रेज़ों से अधिकार मांगने का। पहले तो हम खुद करें, अपने देशवासियों को समानता का दर्जा दें। ओनली देन वी कैन रियली फील कॉन्फिडेंट, और वी डिज़र्व to demand concessions from the British. So these are ideas of Bhagat Singh in those times, that he knew that we live in an unequal society. There is no equity, there is no equality. So we have to bring in that social equality, economic equality, intellectual parity. So all this need to be brought in. Only then we can build a new India. Our new India, and he writes about that new India, not the new India we are talking about today. The new India of Bhagat Singh was where there is no inequality, when there is no untouchability, when there is nobody is actually fighting in the name of religion, when pluralism reigns, where everybody survives. And the one article which he wrote in 1924, which we need to remember, we need an India, and these are his words, we need an India
where there is no stranger, there is no other. No, we do othering every day in today's India. We do othering in the name of religion, in the name of language, in the name of culture, in the name of caste. And Bhagat Singh is writing in 1924 that we need a country where we don't do this, indulge in othering. No? We don't find strangers in our own society, among our own citizens. So this is something which we need to learn, because we are doing this every day in today's India. So these are things which Bhagat Singh has left behind. These ideas he has left behind, and these ideas need to be pursued. Now, in this Why I'm an Atheist, when he's writing about, we should not take it as something, an essay against God. Of course, it is against God. When he talks about मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो भगवान के अस्तित्व के खिलाफ तो है ही. वो कहते हैं भगवान की हमें ज़रूरत ही नहीं है. भगवान, ऐसा भगवान से क्या फ़ायदा जो भगवान गरीबों को, बीमारी को, भूखमरी को, इसको ख़त्म नहीं कर सकता है. उस भगवान का हम क्या करें? बड़ा निर्दयी भगवान है जो देख रहा है कि भूखमरी फैली है, लोगों को खाने के लिए नहीं है, सड़क पर सो रहे हैं, रोने के लिए घर नहीं है. तो इस भगवान का, तो दिस इज़ अ सेंटिमेंट, उसी को लेके वो ही राइट्स बिग ऐसे ना. उसमें ही राइट्स अदर थिंग्स एज वेल. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ही राइट्स अबाउट रैशनैलिटी. वो कहते हैं भाई ये रूढ़िवाद जो है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जो आपको विरासत में मिला है उसको अनक्वेश्चनेबली एक्सेप्ट करें. हर चीज़ पर सवाल उठाइए. एबिलिटी टू क्वेश्चन ना, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक टेम्पर. Scientific temper, he is not using the word scientific temper, but this is what scientific temper means. When you can question, you just don't blindly believe what you get from even from your family. Even if you get from your family, you have to question. And he talks in the context of, while writing this, in the context of Mahatma Gandhi, he said, I see today that people are actually following Mahatma Gandhi blindly. I am not saying don't follow him, but raise questions about what he says. Why are you blindly going after him? I am not saying you don't be his follower. Be his follower, but critically analyze what he is saying, what he is preaching, what he is writing. Engage with his ideas, and then follow. So, which gives us an example today that what are we doing with our so-called leaders, without questioning, without interrogating, without even first of all, there are no ideas today. There is hardly any ideas leaders have. So we don't have ideas to engage with. But in those times there were people the leaders who had ideas, and that those ideas inspired us to engage. And large number of people tried to engage, and Bhagat Singh is one of them, who encouraged people to engage with ideas and then question them, and after questioning, accept them or reject them, whatever. Gender parity, role of women. So for Bhagat Singh, that was very important. That was important for Bose as well. There's another person who is talked about all the time today, without bothering about his ideas. So Bhagat Singh is not alone. Bose is actually in the same league altogether. So these are the treasures of ideas which somebody like Bhagat Singh has left behind. These are revolutionary ideas. They are very difficult to follow, not very easy to follow. That's why we just tend to ignore, most of us, because we can't get along in our lives by following such radical views. But such radical views need to be followed. Otherwise we need to just forget about them, don't talk about them.
If you talk about Bhagat Singh, then talk about him holistically. Talk about his martyrdom and talk about his intellectual legacy. Only then we can truly venerate him or respect him or take him along in our lives. If we are not doing it, then Britishers actually killed him only once. We are killing him every day. If we are killing his ideas. That's what I believe, and that's what I say most of the time. So you spoke of his commitment to secularism and his commitment to tackling communalism, and when we think about his appropriation as a symbol by communal forces today, a part of the reason that it happens is because they focus just on his death and they venerate that and they choose to reject or ignore the ideas that he stood for. So I was wondering if you could talk a little bit about the assembly bomb case and why he actually threw those bombs, because I believe a lot of people are not aware of that context, and if we were to talk about that more and if more people knew about it, they would understand how committed he was to not just workers, which is the context there, but just all the people and to society and its improvement. Good you raised it, because I missed it while I was talking about other things. Like when Badukeshwar Dutt and Bhagat Singh decide to go and make the deaf ear, they do it because there was a plan of the British government, because 1920s is a decade where, later part of the 1920s, where there is a lot of workers movement, industrial movement, labor movement in the industrial belt of India, Bombay, Surat, Vadodara, etc. So this period saw this unrest in the labor classes. The government was trying to bring in repressive bills, trade disputes bill and public safety bill. Despite demands from the Congress party and from the revolutionary like Bhagat Singh, etc., the British government did not care to listen, and they decided to go ahead and bring in an ordinance in the assembly and make the law. Now they decided to go and throw bombs in the assembly to draw their attention. Now there is a huge the critics of Bhagat Singh and his group, revolutionary group, Hindustan Socialist Republican Association, which I didn't talk about. There are so many things one has to leave behind. But HSRA was a group. Hindustan Socialist Republican Association decided that these two people will go in the assembly, throw bombs. Before the bomb were thrown, they set up an office in Agra, in Hingi Mandi area, where bombs training was given. Lots of Jatin Das was one of them, who was invited from Bengal, who trained people to make bombs. The bombs were made which will only make noise and smoke. They will not harm anybody, and that's why they didn't harm anyone. So those who say that he believed in violence, most of them planned that these bombs should not harm anyone, neither the British nor the Indians who were sitting there, the senior leaders. When the bombs were thrown, Motilal Nehru, Muhammad Ali Jinnah, and so many others, they were actually sitting in the house. When they went to throw the bombs, after testing them, that they will not make any noise, the idea was to make the deaf ear. Now, bombs were thrown, they had a revolver, they surrendered with their revolver. They just made two symbolic shots, and after that they surrendered. There was huge opportunity in that chaos for them to leave, but they had planned that they will get arrested
and use the platform to spread their ideology, which they did. Now, all the statements in the court of Bhagat Singh and Bhattacharya that mainly Bhagat Singh, because he was the man who used to write, used the platform to spread their ideas. The whole idea of revolution, what they mean by revolution. And they defined the idea of revolution, that revolution is, our revolution is the revolution of ideas, not revolution which kills people, not revolution which is based on bloodshed. So, this city, and I need to talk a little about that. Before the bomb were thrown, Bhagat Singh was called, Bhagat Singh and his associate Sukhdev. Sukhdev called Durga Bhavi. Durga Bhavi was one of the revolutionaries, wife of Bhagavati Charan Vora, saying that if you want to meet Bhagat Singh for the last time, please come from Lahore to Delhi to meet him. They met at 10:30 in the morning. Durga Bhavi travelled from Sushila Didi and Durga Bhavi, these two people travelled from Lahore to Delhi before on the day bomb was thrown on 8th April 1929. And they meet. Where they meet, not many people know. I live very close to that place. I go for a morning walk every day in that garden. That is Kutsia Garden. Kutsia Garden near Kashmiri Gate, ISBT. In that garden, probably in the ruins which are still there, they met over there. Bhagat Singh was fond of two things, Rasgulla and oranges. And Durga Bhavi brought large number of rasgullas and oranges. He enjoyed all that, ate over there, and within half an hour, at about 11:30, bomb was thrown in the assembly. So this is something which happens in the city, and those like there are some places which are associated with Bhagat Singh's life in this city, and not many people know. One is this Kutsia Garden. Another place is Firoz Shah Kotla. Firoz Shah Kotla is a place where Hindustan Republican Association (HRA) was converted into HSRA. Word socialist was added. A meeting was held on 8th and 9th September 1928, and in that meeting, Bhagat Singh, Bhagavati Charan Vora, Jaydev Kapoor, Fanendra Ghosh, and quite a few others, they all sat together, 8 or 9 people, and deliberated on this issue that socialism should be, because that is our objective now, this should be added to our name. So HRA became HSRA. That also happened in Delhi, in Firoz Shah Kotla. When Bhagat Singh was arrested, he was taken to after the bomb thrown in the assembly, he was taken to the Connaught Place police station, which is still there, that old. Some writers say that one of them was taken to Daryaganj police station. One to this, but this is not really very clear. But they were taken to Connaught Place, and they were kept in a prison. Again, this is very few people know. In Maulana Azad Medical College, Bahadur Shah Zafar Marg, this used to be Delhi jail. And if you go inside the campus, there is a small enclosure where you have a plaque where you can read that Bhagat Singh was kept in a cell which was located here after he threw bombs in the assembly. So that plaque is still there, and we took a little refer to it in a little documentary we made in Kalab years ago. So lots of people who know go there, but most of the people don't know. So these are few landmarks about Bhagat Singh's life in Delhi. So these bombs made noise. Not only noise, they create awareness about the rights of the people,
rights of the workers, and the oppression which the British government was trying to inflict on people through these bombs. So this was a way of Bhagat Singh to create awareness about this, right? Ultimately, the government carried forward whatever they had to do, but at least Bhagat Singh showed the way by protesting, and protesting in a very unique way. That became a news all over the world, and that made Bhagat Singh a public figure not only in India but all across the world, because this was something which became an example of fight against imperialism, against imperialist oppression, imperialist injustice. So Bhagat Singh should be remembered for these ideas. I think they are more important than mere nationalism and shahadat which we talk about. We respect that as well, but that respect is incomplete. We need to remember him for the legacy, intellectual legacy of ideas which he has left behind. Unfortunately, that legacy is more important in today's India. In India, which is actually seeing rise of communalism at a very exemplary level, which we have not seen even during the partition. Because today the communal mentality or communalism is not just violence. There is violence at the level of ideas, because there is something which has gone into our heads. People who are not even communal otherwise, but if you talk to them, you explore, you scratch, you will find that their thinking has become affected by the noise which they see all around all the time. So in these times, we need to make a counter noise using the ideas of Bhagat Singh and even other leaders like Subhash Chandra Bose and Nehru, of course, to tell people that this is the true legacy, this is the India which we need to cherish, which we need to build, not the India which is filled of hate. Thank you for tuning in at the Nehru Center India. For more such videos, please follow our socials on YouTube, Instagram and Twitter.